where we expect to splash down. And if Starship manages to make it all the way to re-entry, we will collect valuable data on the vehicle as it flies through the Earth's atmosphere at hypersonic speeds, or more than 5 times the speed of sound. We expect it'll look something like this animation on your screen with the heat shield tiles facing down. We'll use the Earth's atmosphere to brake the vehicle and then get us into a controllable regime as we go towards splashdown. Now, we did validate Starship's ability to fly and land at subsonic speeds during our suborbital flights several years ago, and gathering data on the aspects like heating and vehicle control while we're traveling way faster will become critical to eventually bringing Starships back from space for rapid reuse. We'll also attempt to open and close Starship's payload door for the very first time, a capability that we'll need when Starship starts flying our next generation Starlink satellites. And there you can see an animation of what that will look like as the satellites are deployed one by one through a slot near the top of the spacecraft. So at this point in time, we are approaching T-minus 21 minutes until liftoff. Let's check in with Dan for a countdown update. SpaceX through Starship launch. Hey, thanks, Kate. Hey, everybody. I'm Dan Hewitt. Good morning. Welcome to Starbase. I'm coming to you from the Raptor's Nest, where I'm here with some of our flight controllers, also our Pad Red team. We're just behind the Mega Bay. Those are our super heavy boosters right behind me, getting ready for the next 4 flights after this one. So we're looking to launch a lot this year. Countdown has been pretty clean so far. We're not tracking any issues that are gating us on the hardware side and the vehicle side from that on-time liftoff at 8:25 a.m. Central Time. That's our T0 right now. We primarily shifted later as we were just working to clear the range. Hello, audio The other big watch item today is going to be the winds. The winds have started to pick up. We're still looking to be below our limits, but there could be a hold at T-minus 40 seconds just to make sure that the winds are acceptable before we go. We are actively loading propellant onboard the vehicle. You can see by the frost line starting to build up. Looks like we're about 80% on the ship main tanks right now and a little over 60% on the booster. Now, Starship uses liquid methane as its fuel, liquid oxygen as its oxidizer. Both of those get cooled down to cryogenic temperatures, so several hundred degrees below zero. And if you followed along with our previous 2 flight tests, the prop load timeline today looks a little bit different. Those first flight tests, it took us about 90 minutes to load all of the prop on board. But since the second flight, we made some pretty significant upgrades to make that time shorter. We added some additional fuel and LOX pumps just to increase our capacity. We expanded the number of heat exchangers and installed a dedicated fill drain line for each stage. But they were sharing one before, now they each have their own. That's just that main pathway to get the propellant to the vehicle. We're aiming for about 51 minutes for today's operation to fully load prop. We did that successfully on our wet dress rehearsal that we did recently. Eventually, though, we're trying to get that time down to about 40 minutes. Just for some context, that's about 5 minutes longer than we take on Falcon 9, but we're doing it with 10 times the amount of propellant. Now, the propellant load on ship started at about T-minus 53 minutes, booster right around T-minus 42 minutes. We are about to pause loading on the main tanks of ship, switch over to the header tanks, and then switch back to close out the main tanks. We're expecting all of the prop to be on ship at about T-minus 3 minutes 30 seconds, and then booster prop load ends at T-minus 2 minutes and 50 seconds. Now, our final countdown and startup sequence is going to be the same as Flight 2. We already tested this on this booster when we did its static fire. Looking back for Flight 1, we lit those Raptor engines on the booster and lifted off about 6 seconds later. Flight 2, we reduced that time by almost 2 seconds. That just helps reduce the stress on the ground systems, improve the efficiency of the rocket. But right now, we're just about to pass 18 minutes away from launch. Winds again, they're still looking a little bit marginal, so we'll keep an eye on those. We're not working any other technical issues, and the range is expected to be green. If we can't make our test today, we have backup launch opportunities in the coming days. Could be 24 to 48 hours. All just depends on how far we get into the count. So check back in with everybody in just a little bit. For now, though, I'm going to send it back to Kate and ship it out at Hawthorne. Thanks, Dan. The countdown is continuing to progress, so let's take a closer look at the world's most powerful launch vehicle ever developed. Starship is comprised of 2 elements, the ship, which has 6 Raptor engines, and the Super Heavy booster,
which has 33 Raptor engines. Starship is capable of about twice the thrust of the Saturn V rocket, and with future engine upgrades, it will actually be three times more powerful. Now, with those future improvements, that'll allow Starship to carry somewhere between 150 and 250 metric tons to orbit, depending on the configuration. For reference, Falcon 9's heaviest payload to date is just over 17 metric tons. So with Starship, we're talking about an order of magnitude greater in terms of payload capability to orbit. And that matters because the amount of mass we're able to launch per rocket is critical to creating a self-sustaining city on Mars. In terms of size, the Super Heavy booster alone stands about 71 meters or 233 feet tall and is about the same height as a fully integrated Falcon 9. The ship stands about 50 meters or 160 feet tall. Stacked together, the booster and the ship are by far taller than the Statue of Liberty, which stands at 305 feet tall with its base. Stacked together, Starship is 396 feet. So, मतलब मैं काफी सारी चीज सुन रहा हूँ एक साथ ये भी सुन रहा हूँ वो भी कर रहा हूँ तो has a diameter that's about 2.5 times that of Falcon 9, and we've got those 30 much larger Raptor engines. This great view of the launch mount looking up at those engines, and we need them to power through the Earth's atmosphere and gravity to deliver those massive cargo and payload. 15 मिनट बाकी है कैसे हो आप हम बढ़िया हैं for vertical takeoff and landing on any hard surface, and that's as opposed to taking off and landing on a runway as aircraft do. And that's important because there are no runways on the moon and Mars. वॉइस ठीक नहीं आ रहा वॉइस में आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है हेलो एवरीबॉडी Vacuum engines, that means that those vacuum engines are optimized with a larger engine nozzle to operate in the vacuum of space and get us higher performance. Your voice is changed. Okay. समझ गया प्रॉब्लम क्या है. Attitude during atmospheric flight and enable a precision landing. The body of Starship is also wrapped in a heat shield made up of 18,000 hexagonal ceramic tiles. Those are designed to insulate. हाँ अब ऑडियो ठीक हो गया होगा 44. हाँ आपका आवाज अब ठीक आना चाहिए. I hope so. नहीं वो माइक्रोफोन 48 के पे चला गया था उसको 44.1 किलो पे रहना है तो वो मतलब मिसमैच हो रहा था आवाज भारी आ रहा है अब तो ठीक हो गया होगा भाई अब तो ठीक कर दिया इस लॉन्च अबाउट लॉन्च नहीं है ये सिर्फ टेस्ट है मतलब कि रॉकेट फूटना नहीं चाहिए ऑडियो वीडियो नाउ गुड ठीक है चलो बहुत बढ़िया बात है भारी भारी आवाज आ रहा है ठीक है बॉटम नहीं फिन के नीचे वो नहीं लगा है आपके हिसाब सक्सेस होने का कितना प्रोबेबिलिटी है बूस्टर पे पूरा भरोसा है और चांसेस है कि बूस्टर नहीं फूटेगा शिप जो है वो डिपेंड करता है प्लीज आंसर 3D पर क्वेश्चन Hot staging also helps to ensure the ship's liquid propellants are at the bottom of the propellant tanks, which is where we need them to be in order to quickly light the ship's engines. It also reduces risk at stage separation because it creates a passive staging system. Starlink डाले हैं कि टारगेट ये है कि होपफुली जब ये अंतरिक्ष की तरफ जाएंगे तो इनके पास अच्छा खासा ये रहेगा क्या बोलते हैं Starship's payload to orbit capacity by 10%, which directly translates to more payload and more people to the moon and Mars. होपफुली ये कनेक्शन जब हाई ऑर्बिट पे रहेंगे तो भी मेंटेन कर पाएंगे क्या टेस्ट करना है वाला सारा चीज टेस्ट करना है ये होल फुल स्टैक टेस्टिंग है भाई मारे को भूख लगा है भाई आप लोग देखो मेरे को खाते हुए मेरे को भूख लग गया है हम क्या करें Here we've got a photo of some of the mock-up suits that are used to demonstrate the range of mobility that astronauts will be expected to have. And we were using these to do human factors demonstrations and figure out the layout of the elevator. नहीं बिरयानी नहीं है मुड़ी है मुड़ी समोसा Super cool. Now, SpaceX will perform one uncrewed demonstration flight before NASA's Artemis 3 mission, which will be the first human surface expedition since 1972.
After those first installations, we'll be ready to fly more people along लोग का डोनेशन आना शुरू हो गया will come into base. ओके तो उसको कवर करना पड़ेगा There's भाई so much to look forward to. It's Mhm. incredible that humans are finally going back to the moon. You can decide, Kate, and the moon is just the proving ground. It's just the start. अच्छा भाई मेरे दिमाग में ऑडियो इधर से भी आ रहा है मैं इधर भी ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ इसलिए आई एम गेटिंग टू कंफ्यूज सचिन SAC अच्छा सचिन जी आपने 100 रुपीज डोनेट किया है बहुत बहुत धन्यवाद आई थिंक आप वही सचिन हो जो मेरे को मुंबई में मिले थे ठीक है ठीक है दूसरा किसी का भी आया है वो भी एक मिनट देख लेता हूँ कहाँ गया हाँ ट्रांजिशन हिस्ट्री के मून लैंडिंग अभी मून लैंडिंग नहीं है सर 2+2 कितना होता है वाह वाह मेंबर्स ओनली क्यों नहीं है गलती से यार हड़बड़ी में कर रहे थे सेटिंग नहीं हुआ देखते हैं एडिट कर सकते हैं क्या कस्टमाइजेशन पार्टिसिपेशन मोड मेंबर्स ओनली कर देते हैं सचिन तेंदुलकर नहीं है मेंबर्स ओनली ठीक है हाँ अब मेंबर्स ओनली हो गया है तो ठीक है वो थोड़ा सा लोगों को गड़बड़ हो रहा था तो वो सॉल्व कर दिए हैं अर्थ इज फॉर वुमेन मार्स इज फॉर मैन आर कमिंग तन्मय मंडल जी दैट वाज इंटरेस्टिंग चलिए हाँ वो सैटेलाइट का गेट डिप्लॉय करेंगे अब अपना हो गया मेंबर्स ओनली कर दिए सेटिंग अब कोई और डिस्टर्ब नहीं करेगा Just also a reminder, actual liftoff happens a few seconds after you see those engines ignite. So you'll see fire and then a few seconds before Starship really starts to take to the skies. Our range team just going to keep on making sure land, sea, air are all clear as we really count down. But that's the latest. We're just coming up on 10 minutes before launch. Everything looking good for Starship's third test flight. It's also back to you guys in Hawthorne. यश आनंद जी भाई टाइम ह्यूमन रेटिंग अभी नहीं होने वाला है टाइम लगने वाला है उसमें अभी पहले लॉन्च तो होने दीजिए सक्सेसफुल उसके बाद ह्यूमन रेटिंग नहीं इट्स टाइम टू शो हु इज डैडी आई एम द ओनली मेंबर नाउ हाँ नहीं दो लोग हैं दो लोग मेंबर्स हैं मेंबर लोग दो मेंबर to take reusability even further by reflying both stages with little downtime between flights. And we plan to fly as often as possible. As you mentioned earlier, rapid and they are already beyond daddy हाँ टेक्निकली स्पीकिंग और कोई कंपटीशन है ही नहीं मतलब डिस्कशन क्या करें कोई और है ही नहीं मतलब दूर दूर तक नहीं है मे बी ब्लू ओरिजिन हो जाए क्योंकि ब्लू ओरिजिन धप्पा मार रहे शायद यूएलए को ही खरीद लेंगे अगर यूएलए का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खरीद लेते हैं ब्लू ओरिजिन तो अच्छा चांसेस है कि दे कुड स्लोली स्टार्ट टू ग्रो एक्सपोनेंशियली 9 मिनट्स गाइस 9 मिनट बचा हुआ है systems that will support rapid reusability. When we start recovering Starship boosters, we'll want them to return to the launch site for a quicker turnaround. Is there any payload? नहीं सिर्फ ये डमी है payload नहीं है ये डमी है fully डमी है This is when the tower reveals its dual purpose. After launch, the arms or the chopsticks on the tower will payload the booster into position to ensure a soft landing. NVIDIA is daddy. Sounds hard or even impossible to do. Well, that's the inspiration for naming them chopsticks. Some of you might recall a little film called The Karate Kid, where Mr. Miyagi famously taught the main character, Daniel, that if he could catch a fly with chopsticks, he could accomplish anything. Now, today we do have 4 ships and 4 super heavy boosters built, with more coming off the production line as our star factory continues to grow. These vehicles are slated for future flight tests just like today's, and in fact, just this week we static fired our next ship that's planning to fly and expect to test the booster as soon as the launch mount is free from today's flight test. Balls to the wall. बात सही है. While we really hope to get our splashdown location in the Indian Ocean, but any data received will help us improve. It's the third of many future flight tests for Starship before it becomes fully operational.
And that's the goal of flight tests. They teach us about the limits of our design and improve our understanding of the vehicle, and ultimately help us make Starship more reliable and rapidly reusable. So whatever the outcome and हाँ, वो जो आप ब्लैक स्क्वायर्स देख रहे हैं वो स्टारशिप डिश है। मतलब स्टार लिंक डिश है वो। होपफुली कम्युनिकेशन स्पेस में जारी रखेगा, होपफुली। Yeah, rapid exactly. iteration is a key of SpaceX. होपफुली Yeah, we've done it with all of our major innovative advancements, including Falcon, Dragon, and Starlink. We believe that if you're not failing, you're not learning and improving the design. Yeah, many of the innovations that we've developed have come हाँ, इनका आवाज मैं थोड़ा कम कर दे रहा हूँ, आप लोग को थोड़ा आवाज कम आएगा, लेकिन मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है, मैं खुद का आवाज डिले से सुन रहा हूँ तो थोड़ा सा all of ऑड this लग रहा है। testing, all of the iterations. अभी सिर्फ टेस्टिंग हो रहा है, अभी फ्लफ की बात हो रही है कि ये टेस्टिंग है वो है। अभी ज़्यादा कुछ नहीं है। अभिनव शर्मा जी तिगड़म आपने हमारा जॉइन कर लिया। सो सर से उप्स के ऊपर भी वीडियो बनाओ। CLADS+3 ये क्या है भाई, गूगल करना पड़ेगा मेरे को। Originally, it अ, originally it was क्या लिखा है आपने? not designed to be reusable. हाउ हीट शील्ड शावर्स गोज। हाँ, होपफुली इस बार कम होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए होपफुली। हीट शील्ड्स नहीं गिरने चाहिए, उसी के लिए तो पूरा मेहनत किया है। And now on hardware received there, and now our dragons are reusable and also rapidly at a much rapid pace than they used to be. Yeah. Ding Tops. I mean, Member, great 1 month. learning Sir Claude from Fields Scott Repetitive Bino. our original Dragon to our new crew and cargo vehicles have directly improved the operations, and they've helped us change our understanding of what's possible when it comes to rocket. क्लॉज 3 क्या है भाई, मेरे को कॉन्टेक्स्ट नहीं मिल रहा है, आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? AI मॉडल है क्या कोई? -6 minutes, so That's not another good time to check in with Dan for the rest of terminal count. How we looking, Dan? टर्मिनल काउंट शुरू हो गया, री एंट्री सर्वाइव कर जाएगा, कर जाना चाहिए। वो डिपेंड करता है, वही सब की तो टेस्टिंग हो रही है। अभी तक जितना भी डिस्कशन हो रहा है, दोज आर होप्स एंड प्रेयर्स एंड ड्रीम, क्योंकि पहला वाला में बहुत प्रॉब्लम था, दूसरा वाला में ऊपर जाने तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम शुरू हो गया। बूस्टर में स्प्लॉश के चलते स्वाहा हो गया, और जो स्टारशिप था वो उसमें ऑक्सीजन डंप के दरमियान आग लग गया। तो मतलब कभी भी ढंग से उतना दूर तक गया ही नहीं कि री एंट्री तक की टेस्टिंग हो। तो होपफुली यहाँ पे री एंट्री की टेस्टिंग हो सकेगी, होपफुली। और ये री इग्निशन बर्न स्पेस में करेगा तो वो मतलब वैक्यूम रीस्टार्ट करने का टेस्टिंग इनको मिल जाना चाहिए। सो दैट शुड बी गुड, दैट शुड बी गुड। अच्छा भाई, लाइव स्ट्रीम कर लेता हूँ, उसके बाद खाऊंगा, चाय पी लेता हूँ तब तक। रीइग्नाइटेबल इंजन लाइक रैप्टर और मर्लिन, क्योंकि आप वैक्यूम में जब कर रहे हो ना, तो वैक्यूम में फ्लूइड डायनामिक्स अलग तरीके से बिहेव करता है कंपेयर टू एटमॉस्फेयर पे। तो आप टेस्टिंग सारा एटमॉस्फेयर के लिए कर रहे हो, तो आप गारंटी नहीं दे सकते कि अंतरिक्ष में वो कैसे बिहेव करेगा। जैसे अंतरिक्ष में गैसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी डिसॉल्व हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा जल्दी निकल जाएंगे। अब आप उसके अंदर इग्निशन कर सकते हैं, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन प्रॉब्लम है आप उसके हिसाब से अगर थ्रॉटल डिज़ाइन कर देते हो, इंजेक्टर डिज़ाइन कर देते हो, तो सी लेवल पर वो इग्नाइट नहीं हो पाएगा। तो दोनों में इग्नाइट करने में बहुत दिक्कत है। आई थिंक मैं 40 पहले होल्ड आएगा थोड़ी देर, देखते हैं। T-40 सेकंड भले हो सकता है, T-40 मिनट्स नहीं होगा, उतना देर तक ये लोग प्रोपेलेंट रख के छोड़ नहीं सकते। प्रोपेलेंट पूरी तरह से फुल ट्रांसफर भी करने वाले हैं। हाँ, वो टेस्टिंग है कि फ्यूल अंदर में वो कंट्रोल कर पा रहे हैं, पंप्स चला पा रहे हैं कि नहीं, वो सब वही सब चीज़ क्लियर होगा। ये डॉली चलने वाला चल रहा है क्या? And we don't have this opportunity with Falcon or Falcon Heavy. Up until the T-40 second point, aborts are just holds. So anything that would trigger an abort prior to T-40 seconds becomes a hold. So that's a really cool feature to allow the team to wait for final checkouts or assess prop levels, engines, avionics, vehicle pressurization. It's really helpful to ensure a liftoff. डॉली वाली चाय है क्या? नहीं नहीं भाई, नॉर्मल चाय है। Very different from Falcon. I'm sure people have watched our launches, and then we get right down past prop load, and then have to scrub because of weather or scrub because of an issue on the vehicle. ये लोग YouTube पे नहीं करते ना, नहीं तो 4K कर पाते। फुल एचडी ही आ रहा है, और बिट रेट भी बहुत कम लग रहा है, मतलब जो इनका सोर्स है। इससे ज़्यादा बढ़िया आपको उसमें टिम डॉट का, खैर वो तो अपना पूरा सेटअप लगा दिया। 4K 6K का तो उसका मेन कैमरा है, एंड 4K का पूरा पाइपलाइन है, तो ही इज़ गेटिंग मच मच बेटर। क्या बोलते हैं, You might miss that window and then have to recycle to another day. Yeah, exactly. Which is kind of like today. Like we mentioned earlier, winds are the thing that we are watching. So good news there. So we are. लिखते हैं भाई सर डबल मॉनिटर है क्या? हाँ ऑब्वियसली, ये मॉनिटर पे मेरा YouTube का सारा डेटा चल रहा है, इस पे मैंने पूरा फुल स्क्रीन करके रखा हुआ है। इसका क्या बोलते हैं आपका, SpaceX का स्ट्रीम, ऑफिशियल स्ट्रीम देख रहे हैं। डुअल मॉनिटर है, डुअल मॉनिटर है। And like we talked about, we have आजकल कौन बिना डुअल मॉनिटर के काम करता है?
लाइक मैंने तो किसी का ऑफिस भी नहीं देखा जिसमें डुअल मॉनिटर ना हो। अब खाने का मन कर रहा है भाई, ये 4-5 मिनट तक देख लेते हैं, उसके बाद खाएंगे बढ़िया से। अभी तक सिर्फ फ्लफ बात कर रहे हैं। Yeah, for flight one, we wanted to clear the pad, and we did. For flight स्टारशिप बूम वेल देखिए, पता चलेगा बूम होता है कि नहीं होता है, पता है विल नो। we did. क्योंकि स्प्लैश करेंगे तब तो ऑब्वियसली बूम होगा, बट स्प्लैश डाउन तक अगर चले जाते तो देन इट वुड बी अ All सक्सेस। that being said, we're going to check back in with Dan to take us through the final 2 minutes of terminal count. फाइनल 2 मिनट्स पहुंच गए गाइस, 2 मिनट बाकी है। 2 मिनट में ये बूम हो गया तो बड़ाम होगा, जो भी होना है 2 मिनट में हो जाना है। अगर डिले भी होता है तो यही 2 मिनट में होगा। ये आप पूरी टीम को देख सकते हैं, टीम काफी एक्साइटेड है। ब्रो थिंग्स इज मिसिंग। ओपन एआई मॉडल से, अरे देखिए एआई वाई पे उस तरह का मैं बात नहीं कर सकता, वो सब फ्लफ ज्यादा होता है, मतलब मटेरियल कम होता है। व्हाट इज द वाइट्स, वो फॉग है वहां पे, इतना क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट हो रहा है ना, कुछ केसेस में वो नाइट्रोजन वेंट है, कुछ केसेस में वो फॉग है। तो जनरली या तो नाइट्रोजन है या तो वो है क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन है, वो नाइट्रोजन गैस निकाले। ग्लोबल शटर लिया है टिम भाई ने, हाँ तो वो काफी बढ़िया उनको सेटअप मिल जाए। ग्लोबल शटर के साथ तो अति बम बम सेटअप उनका है। खैर वहां पे रहने का फायदा है। हाँ कैमरा के मामले में मैं भी अपग्रेड करने वाला हूँ अपना कैमरा, लेकिन वो तब करूंगा जब मतलब फाइनेंस सिक्योर हो गया कैमरा के लिए। बट जैसे ही ये होगा क्या बोलते हैं, नया कैमरा लॉन्च होगा तब मैं खरीदूंगा। A7C, A7C नहीं, हाँ A7 Mark 5 का मैं इंतजार कर रहा हूँ। क्रायोजेनिक फ्यूल, हाँ क्रायोजेनिक फ्यूल का है। भाई एक प्राइवेट कंपनी इतना आगे गई, यकीन नहीं होता। प्राइवेट कंपनी तो आगे जाती है, एप्पल को कंपेयर कर लिए किसी भी प्राइवेट इससे, गवर्नमेंट एजेंसी से, गूगल को कंपेयर कर लिए किसी प्राइवेट कंपनी ही आगे जाती है। गवर्नमेंट का काम ब्यूरोक्रेसी होता है, ना कि मतलब रियल, मतलब वो लॉन्ग टर्म पे R&D कर सकते हैं गवर्नमेंट, और उसके बाद उसको प्राइवेट को ही देना होता है, प्राइवेट ही उसे आगे ले जा सकती है। आगे ले जाने का काम गवर्नमेंट नहीं कर सकता, खाता खोल सकता है लेकिन आगे ले जाने का काम नहीं कर सकता। ओके T-16 10 सेकंड्स होने वाला है बहुत जल्दी। दिस हैव रियल मीट, ओके काउंटडाउन टाइमर स्टार्ट हो गया है भाई लोग। थिंग्स आर गेटिंग रियल, थिंग्स आर गेटिंग रियल। ठीक है, गाड़ी खुल गई है, गाड़ी खुल गई है, लॉन्च पैड क्लियर हो गया है, कोई टेंशन नहीं है। और तेरे तो एक्सेलरेशन भाग रहा है महाराज जी, महाराज जी इज गोइंग फास्ट। 200 किलोमीटर पर आवर क्रॉस हो गया है। ओ जी बहे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं स्पीड में। ओ वेदर भी क्लियर हो गया है, ओके दिस इज गुड, दिस इज गुड। ड्रोन का बेचारा लिमिट हो गया, ड्रोन का बेचारा लिमिट हो गया, ड्रोन का लिमिट हो गया 400 किलोमीटर। भाई फॉग 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 हटो, हाँ यही तो चाहिए, स्पेस कैम व्यू। इसी के लिए स्टारलिंक का पूरा व्यूज है। होपफुली स्टारलिंक एवरी बार अच्छा से डेटा टेलीमेट्री देता रहेगा। Let's expect seconds into flight, we are feeling the rumble. We are seeing 33 out of 33 Raptor engines ignited on the super भाई heavy एक्सेलरेशन booster. बम बम है, बहुत स्पीड से भाग रहा है भाई, 5 किलोमीटर क्रॉस कर गए। लाइक भाई उड़े जा रहे हैं भाई, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया भाई। Trajectory looking nominal. 1 मिनट के अंदर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा भाई, वो भाग रहे हैं तो। 33 lit up once again. ब्लैक स्मोक, हाँ हाँ वो मुझे एकदम श्योर हो गया कि वो वही ऑक्साइड फॉर्मेशन है, नाइट्रस ऑक्साइड। Maximum dynamic pressure. And passing supersonic, so we're now moving faster than the speed of sound. सुपरसोनिक भी हो गया। और टाइल मुझे नहीं लग रहा है, टाइल में ज्यादा डैमेज नहीं लिख रहा है, 1 या 2 डैमेज ही दिखा है, ज्यादा नहीं लग रहा है। I would put very good hit rate on tiles. Now the next major milestone is going to be a hot staging maneuver. Again, we're going to be लेकिन लग रहा है इस बार एक्सेलरेशन बहुत तेज है। seconds to do that. We're going to shut down all but the 3 center Raptor engines on super heavy. हाँ 1 ठो टाइल, 2 ठो टाइल, 3 टाइल, 4 टाइल मेरे को डैमेज दिख रहा है, ज्यादा डैमेज नहीं है। The clamps holding the 2 stages together. 4 ही टाइल डैमेज दिख रहा है। Starship second stage will ignite its engines, the RVAX first. 2 मिनट होने वाला है और ये 3000 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच गए हैं भाई, उड़ रहे हैं अगली बार तो। कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गया क्या इंजन? So if you look close and we get good tracking, you might be able to see those center right after. इंजन थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड हो गया लग रहा है इस बार, बहुत ज्यादा स्पीड से थ्रस्ट भाग रहा है। Push Starship off of the booster. ओके ओके भाई जा रहे हैं। गर्म हो गया इंजन, हाँ भाई बहुत ज्यादा स्पीड से एक्सेलरेशन पकड़ रहे हैं। Now we're going to be coming up right at around the 3-minute mark on that hot staging maneuver.
3 मिनट पे ये लोग Again, हॉट we'll see स्टेजिंग करने the वाले हैं. booster engines start to shut down. You'll see all but 3 lights go out in the middle. And then we'll see the engines ignite on ship, pushing it away. And that will start carrying the ship into space. Booster will start to do its flip and then move into the boost back burn, इंजन setting it बंद. up for eventual splashdown बर्फ in the टूटा. Gulf of Mexico. कम ऑन. हॉट स्टेजिंग हो गया. कोई बूम बम बड़ी नहीं हुआ है. स्टारशिप चालू हो रहे. स्टारशिप का नहीं चालू हुआ है. चालू हो गया है. हाँ, आई थिंक स्टारशिप चालू है. उसका एग्जॉस्ट नहीं दिख रहा, बट Hot स्टारशिप चालू है. staging confirmed. ओए तेरी. Boosters now making its Damn. way back, seeing 6 engines Damn, boy. ignited on ship. डाइम बॉय हो गया. डाइम बॉय. Okay, we और got a देखिए Starship इंजन on its way to डीसेलरेट बर्न space कर and a रहा है एकदम. booster on the way back to the 4000 किलोमीटर Gulf. पर आवर से Oh, man, 3500 तक उतार दिया. I need a moment to pick my jaw up from the floor because these views are just stunning. These हाँ, are बूस्टर live पूरी तरह views से from इंटैक्ट लग रहा है, यानी कि Starship. बूस्टर बूम नहीं First हुआ है. stage is currently performing the boost. कवारी डिट. Good there news informing us that the बाप second रे stage बाप, or the भयानक ship, everything deceleration looking हो good, रहा है nominal भाई. there. First stage is currently performing the boost back burn, expecting that to last about 1 minute. That boost back burn. That boost इंजन back बंद burn करना propels शुरू the कर दिए. booster back towards the coast, 1000 taking it to a किलोमीटर पर landing आवर in तक the कर दिए. waters of the Gulf of Mexico. ये We're बूस्टर बंद कर only दिया. using बूस्टर the मतलब super heavy ऑलमोस्ट boosters, 13 800 center किलोमीटर engines पर आवर from से भी here नीचे on उतार out. दिया भाई. तो एकदम स्लो कर दिया. Whenever they relight, you'll be able to see that in the left bottom corner. Those are the ones that can gimbal. In other words, they move and change direction in order to change the thrust. फाल्कन to 9 विल बी steer प्राउड. देखिए the देखिए first लैंड stage होने back दीजिए. to लैंड होने Earth. दीजिए. स्प्लैशिंग है और हमको लग रहा है वही स्टारलिंक से ही इतना अच्छा डेटा कम्युनिकेशन है. ये ग्राउंड व्यू नहीं है. स्टारलिंक का कम्युनिकेशन ये Wow, these अच्छा are है. just incredible views coming to जैसे us. बोले ग्लिच करना शुरू कर गया. भाई बहुत शाय हो. Everything is looking good for both स्टेज the 2 first stage on the 8000 किलोमीटर left-hand पर आवर side से of your ज्यादा तेज screen चल or रहा the है. super heavy booster, एल्टीट्यूड है 123 as किलोमीटर. well as on the right-hand side of your screen, that is Starship, or we also refer to that as the ship. Now the boost back burn. Was बूस्टर the first स्पीड of गेन 2 कर रहा है. burns मतलब अब वो required ग्रेविटी to वेल में आ return गया it है. to बूस्टर Earth. का स्पीड बढ़ने लगा The है next फिर. one will be the landing burn, where all 13 center engines will initially ignite and then transition into a 3-engine burn to help slow it down. Now, just as a reminder of the stage 1 test objectives, we're हीट looking टाइल से for बहुत कम controlled डैमेज दिख ascent, रहा है. ऐसे which पिछले we बार में तो बहुत have सारे so व्हाइट far. स्पॉट्स दिख रहे थे. इस बार Stage बहुत थोड़ा थोड़ा separation, व्हाइट which स्पॉट्स है. gorgeous. We cruised right through it, as well as phenomenal trajectory. बाप रे. good news बूस्टर there बहुत telling स्पीड us पकड़ that लिया the है. path that 2000 Starship किलोमीटर is पर आवर हो on, गया. हाय रे. is good. सिग्नल Now, गया. Starship's second stage is still firing its Second stage engines, का signal and drop as किया. you heard, following planned flight path, the ship चल objectives, तब भी we're रहा है, looking बस for वो hot डेटा staging सिग्नल गया again, था. हाँ, cruised डेटा right through वापस आ गया. that. We're looking to demonstrate controlled ascent as well as orbital insertion. क्या हो रहा है भाई? Now, the bottom right-hand corner of the screen shows the ship engine graphics, so be sure to keep an eye on those. Yeah, Kate, like this is just a phenomenal test so far. Super Heavy is performing beautifully Booster today. बहुत तेज हो गया. on Mach its 3 चल रहा है return वो. leg of the journey. 3000 Ship किलोमीटर पर आवर है. continuing to burn its 6 Starship engines, those larger 12,000 हो circles, गया the है. Raptor vacuum engines, the inner circles, the Raptor sea level engines. We're 142 किलोमीटर आपका जा चुका है. ओके ओके. अब ग्रिड फिन एक्शन करना शुरू कर दिया है. री एंट्री हो रही है. ग्रिड फिन एडजस्टमेंट कर रहे हैं. बाप रे. 4000 किलोमीटर पर आवर पे चल रहा है भाई. ऑर्बिटल 28,000 होता है. guiding us through the atmosphere back towards our splashdown site. Again, we're going बाप for रे. a hard बूस्टर start. बहुत तेज उतर रहा है. हम एक्सपेक्ट नहीं किए थे इतना तेज है A बूस्टर. soft splashdown. बूस्टर बहुत ज्यादा तेज चल रहा है भाई. So for Fourth- landing burn, we're going to expect to see अब थोड़ा स्लो होना शुरू हुआ. 3500 आया. अब मतलब डीजल हो रहा है वो. बिना इंजन के सिर्फ एटमॉस्फेरिक डीजल है वो. and then just the 3 in the second उफ उफ. ओहो. ओए होए होए. Let's see if that'll work. ओए, एकदम डीजल मार रहे हो. एकदम डीजल किए जा रहे हैं. ढिंक चिका हो रहा है यहाँ पे. कम ऑन स्टारलिंक. लिंक बनाए रखो भैया. लिंक बनाए रखो. इंजन चालू हो गया है. एक तो चालू हुआ. सिग्नल गया. नहीं. Let's see if we can get some other video of that. हंटिंग हो रहा है. It is a test objective today. It is still something Signal that गया. we're attempting to learn. अच्छा एक टाइल गया है. पक्का एक टाइल चला गया. ऐसा दिख रहा है एक टाइल. To demonstrate the controlled re-entry up to that point is pretty darn good. बूस्टर का आई थिंक चला गया. बूस्टर का सिग्नल नहीं आ रहा है. With its ascent burn. आई थिंक बूस्टर गया.
Which burn स्टारशिप चल रहा है about 6 minutes total. आई थिंक We're बूस्टर गया expecting that this बूस्टर गया burn will end just after T plus 8 minutes, about a minute from now. 20,000 किलोमीटर पर आवर हो गया है मतलब वो ऑर्बिटल वेलोसिटी जाएंगे नहीं उनको ऑर्बिट करना नहीं है Farther than we've gone on flight 2. Just wonderful views and great engine performance from the vehicles. So far, we've hit controlled ascent. We're in the middle of that right now. We demonstrated the hot staging, Kate, as you said, cruised through that. We demonstrated controlled entry of the 24,000 kilometer per a hour little short of the engine relay, but hey, that's something we can learn for the next one. Yeah. 147 kilometer per hour. Moments ago was a live shot of Star Command. There you see it again. This is our mission control center at Starbase. Where vehicle operators are standing by. Now, the next milestone coming up is in less than a minute. At that point, ship will, or I'm sorry, actually it already has. इंजन कट ऑफ हो गया फूटा नहीं बहुत बड़ी बात है वेंटिंग हो रहा है थिंग्स आर लुकिंग गुड थिंग्स आर लुकिंग स्टेबल 152 किलोमीटर पे उन्होंने इंजन शट डाउन किया है स्पीड है 26,000 किलोमीटर पर आवर भाई बहुत वेंटिंग हो रही है भाई क्या कर रहे हैं वेंट पे वेंट किया जा रहा है ये ऑर्बिट जा सकता था ऑर्बिट करना नहीं था इनको उनका क्लियरेंस नहीं है ऑर्बिट करने का मतलब टेस्ट है ना completely blown away right now. What a day. Congratulations to the entire SpaceX team. I mean, this flight pretty much just started, but we're farther than we've ever been before. We've got a Starship not just in space, but on its coast phase into space. Just to recap where we've come, and it's only been अब वो प्रोपेलेंट ट्रांसफर का टेस्टिंग करेंगे We lifted off right on time. बट बहुत वेंटिंग हो रहा है मेरे को वेंटिंग थोड़ा ऑड लग रहा है बहुत ज्यादा वेंटिंग हो रहा है बूस्टर वन पीस हो गया आई डोंट थिंक बूस्टर बचा है बूस्टर का टेलीमेट्री भी आना बंद हो गया है तो आई वुड नॉट से कि बूस्टर बचा है एनीवे उसका ग्राउंड क्रूज से लोग फोटो खींच लेंगे आई हैव होप लेकिन बूस्टर फूटना तो नहीं चाहिए सारा चीज सक्सेसफुली कर लिया तो क्या फूट गया बूस्टर गया ये कंफर्म कर दिया सारा इंजन चालू नहीं हुआ wow, a ship in space. We've got a bunch of, as we said, ambitious objectives ahead of us over the next couple of minutes and pretty much over the next hour where we're going to really, we've got the ship in space. We're now going to 1 hour तक चलेगा भाई try and learn as much as possible about some of the other yeah, I did not expect that. I did not expect that. Raptor relight in space, so it's just going to be incredible. भाई इतना वेंटिंग क्यों कर रहा है मेरे को बड़ा अनईजी फील हो रहा है इतना वेंटिंग क्यों कर रहे हो भाई but wow, what a liftoff, what a hot stage, what an amazing sight to see Starship there in outer space. बूस्टर एम्प्टी हो हाउ डज इट ब्लास्ट अरे उसमें वो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है भाई उसमें अभी भी कुछ लीटर का फ्यूल बचा ही होगा 30 minutes or so, we'll be back around the T plus 40 minute mark, and that'll be Starship continuing to coast, hit those ambitious test objectives, and then continue on to re-entry. We're not totally sure what video that we'll get, since that normally comes to us as we overfly ground stations, and we don't have a ton of those along our trajectory. But as we have video, we'll be sure to bring that to you. Starlink may be able to bring us additional communication paths today that will allow us to talk to Starship through re-entry with no communications blackout period. It's a possibility, but either way, we will be live for all of today's milestones. And of course, when we do have views, Puerto Rico. especially like the ones that we have now, which I just cannot get over, when we have views, we will be sure to bring those to you live. But no views or no views, we'll see you back here at T plus 40 minutes. Pez door is opening. And there we just heard call it that Pez door is opening, so that's great. और दरवाजा खोल रहे हैं मतलब वो पेलोड डिप्लॉयमेंट के लिए दरवाजा खोल के टेस्ट कर रहे हैं हीट शील्ड में मुझे सिर्फ 4 ही 5 हीट शील्ड डैमेज दिख रहा है बहुत ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है
सिर्फ 3 ही That 4 test डैमेज हुआ है। objective is already underway. So come back और here, एल्टीट्यूड है stick around till 181 T plus किलोमीटर पे। 40 minutes for coverage of कम्युनिकेशन हो रहा है Starship's स्टारलिंक के थ्रू, burn ग्राउंड लिंक के थ्रू नहीं हो रहा है। demonstration, followed by its reentry and what is sure to be an exciting splashdown. अच्छा भाई, तो क्या क्या हुआ अभी तक? इन्होंने सब चीज सही किया। हमको लगता है इंजन ऊपर जाने में थोड़ा भावना में बह गया था, बहुत ज्यादा तेजी से एक्सेलरेशन था। वो हुआ, सब चीज हुआ। हॉट स्टेजिंग सक्सेसफुल हुआ, उसके बाद डिटैचमेंट हुआ। डिटैचमेंट के बाद बूस्टर जो है री एंट्री बर्न भी कर लिया। लेकिन आई थिंक जब फाइनल लैंडिंग हो रहा था तो इंजन री इग्निशन फेल हुआ, यानी कि एक ही इंजन स्टार्ट हुआ, 3 होना था, तो वो स्पीड बहुत कम रहा। अब रहा बात कि उसमें टर्मिनेशन सिस्टम बूम कर दिया उसको, कि रॉकेट खुद बूम हुआ, बट आई मोस्ट लाइकली टर्मिनेटर सिस्टम उसको बूम किया है। तो फ्लाइट उसका टर्मिनेट हो चुका है, ये क्लियर है, डेटा आ चुका है कि बूस्टर चला गया। तो बूस्टर हम लोग त्याग चुके हैं। लेकिन हाँ, बूस्टर पिछले बार से बहुत आगे गया, मतलब वो उतना दूर तक आ गया, तो दैट मीन्स कि मतलब आई एम प्रीटी श्योर फोर्थ लॉन्च में वो लोग सॉर्ट कर देंगे। सेकंड स्टेज ऑर्बिट जा सकता था, गया नहीं, क्योंकि वो उसका प्लान नहीं था, मिशन नहीं था। और सेकंड स्टेज और मतलब उसी जगह पे है जहां उसे होना चाहिए। उसका स्पीड है 26,317 किलोमीटर पर आवर। वो काफी फास्ट है, मतलब वो थोड़ा सा ही अगर जान लगाता तो पहुंच जाता ऑर्बिट, बस ऑर्बिट के लिए टाइम नहीं कर रहे थे। अभी यहाँ इनका जो बाकी सारा मिशन है वो कंप्लीट कर रहे हैं, यानी कि पहले था कि पेलोड डोर खोल के बंद करके देखो। ऐसा क्यों करना चाहते हैं? ऑब्वियसली आपको पहले पता हो कि आपका हाइड्रोलिक्स या इलेक्ट्रॉनिक एक्चुएशन चलेगा कि नहीं चलेगा। दूसरा, आप स्पेस में जब जाते हो तो प्रॉब्लम होता है कि अगर दो मेटल छूता है एक दूसरे को बिना कोटिंग के, तो वो वेल्ड हो जाता है। तो ये इसीलिए टेस्टिंग करनी ज़रूरी होती है, कि मतलब आपका जो मेटल से, कई बार बहुत सारे मिशन बर्बाद हुए हैं कि मेटल टू मेटल टच हो गया, वेल्ड हो गया। स्पेस में आप एकदम नहीं करना चाहोगे मेटल टू मेटल टचिंग। उसके लिए आपको ये होना चाहिए, कोटिंग होना चाहिए दोनों पे, या एक में होना चाहिए कोटिंग। तो इसीलिए ये सब टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अ, अभी ये काफ़ी टाइम तक ये इंटरनल टेस्टिंग होगी, डेटा कम्युनिकेशन होगा। होपफुली इनके पास अच्छा कम्युनिकेशन रहेगा, क्योंकि स्टारलिंक के थ्रू डेटा रिले हो रहा है। तो लेकिन हाँ, स्टारलिंक पे एक दिक्कत है कि वो सैटेलाइट्स बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है। स्टारलिंक्स के सैटेलाइट इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 250 के आसपास हैं। ओ, ये टैंक के अंदर का है? ओके, ये टैंक के अंदर का फुटेज आ रहा है भाई, सही है। टैंक के अंदर का फुटेज दिखा रहे हैं 14 मिनट 30 सेकंड पे, दैट्स खोखला लग रहा है। ओ, टैंक नहीं है, पेलोड बे है, वो पेलोड बे है। हाँ, तो वही मैं एकदम श्योर हूँ कि बूस्टर को बूम होने के केस में बस वही हुआ था कि बूस्टर जो है मतलब लैंडिंग के दरमियान उसका इंजन रीइग्नाइट नहीं हुआ। अब मैं श्योर नहीं हूँ कि रॉकेट खुद फूटा या कंप्यूटर बोला कि सर आप अनसेफ हो रहे हो, तो अब मैं आपको ऊपर पहुंचा देता हूँ। मोस्ट लाइकली ऊपर पहुंचाने वाला बात है, क्योंकि इतना बड़ा बूस्टर खुद ब खुद बूम नहीं हुआ, ऊपर से उस वजह फ्यूल भी उतना नहीं बचा था। सो मोस्ट लाइकली टर्मिनेशन हुआ है। लेकिन उसका कन्फर्मेशन नहीं मिला, या मिला होगा, मैं बोल रहा हूँ, सुनाई नहीं दिया होगा। सो दैट कुड ऑल्सो बी। बट अभी तक ये थर्ड से बहुत बेटर चला है। इसमें कोई डिस्कशन नहीं, थर्ड से बहुत मतलब, यानी कि अगर इसमें वो लोग पेलोड रखते तो ऑर्बिट पहुंच जाते। सो एफ टी एस हो रहा होगा मोस्टली, हाँ, फ्यूल ट्रांसफर टेस्टिंग हो रहा है इनका अभी। तो एल्टीट्यूड बढ़ते जा रहा है। एल्टीट्यूड हो गया इनका 203 किलोमीटर, काफ़ी ऊपर चले गए हैं। और इनका स्पेस एक्स का मेन स्ट्रीम आ रहा है अराउंड 2.3 मिलियन लोग देख रहे हैं भाई, तो कुछ ज़्यादा लोग बह गए हैं। दैट्स इंटरेस्टिंग। अवेटिंग एक्विजिशन ऑफ सिग्नल। सिग्नल भाई, सिग्नल। 206 किलोमीटर की ऊंचाई पहुंच गया है। पोर्टोरिको से इनका डाउनलिंक चल रहा है। हम्म। पैसा खत्म हुआ गया। ओके ओके ओके। हाँ, ये अंदर में गैस गैस हो रहा है। गैस क्यों आ रहा है अंदर में? अंदर में कोई गैस भरे हैं क्या फ्लश करने के लिए? बट व्हाई वुड यू पुट गैस इन द फ्लशिंग सेक्शन? हाँ, बट हमको लग रहा है कि शिप पूरी तरह से इंटैक्ट है, पूरी तरह से काम कर रहा है जैसा करना चाहिए। हाँ, दिस इज गुड, दिस इज लुकिंग गुड। आई वुड से ये थर्ड वाले से तो, ये मतलब सेकंड वाले से बहुत आगे जा चुके हैं। ओह, 0G है बाय द वे, अंदर में सामान फ्लोट कर रहा है। दे हैव ऑलरेडी रीच 0G। सो सो आई वुड से काफी अच्छा चल रहा है। 0G है, शिप के अंदर 0G है, फ्लोटिंग हो रहा है सारा चीज, मतलब मेटल पार्टिकल्स आपको दिखेगा कि फ्लोट कर रहा है। और एल्टीट्यूड हो चुका है 213 किलोमीटर। वो अब धीरे धीरे, मतलब उसका बैलिस्टिक ट्रजेक्टरी अब धीरे धीरे कूल डाउन कर रहा है, वो धीरे धीरे स्पीड उसका री एंट्री सर्वाइव कर जाएगा। वो समय बताएगा 40 मिनट बाद, अभी तुरंत थोड़े पता चलेगा, 40 मिनट बाद लगेगा।
अभी ये लोग टेस्ट दरवाजा कर रहे हैं। दरवाजा मुझे दिख तो नहीं रहा है, मतलब दिख रहा है, आई एम सीइंग द शेप, लेकिन दरवाजा पूरा खोले नहीं है अभी, या खोल के बंद कर चुके हैं मे बी। वो जो आपको वाइट ग्लो दिख रहा है दैट इज द दरवाजा। ग्लो जो दिख रहा है, खोल रहा है कि बंद कर रहा है भाई, आई एम नॉट श्योर। आई कांट टेल, मतलब दरवाजा लग रहा है थोड़ा सा अलग तो है क्योंकि तब लाइट अंदर आ रहा है, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि वो पूरी तरह से खुला है या बंद हुआ है। नॉट गेटिंग कंफर्मेशन, लेट्स जस्ट पुट इट दैट वे। स्पीड की भावना शुरू हो गया है। स्टारलिंक भाई, अपने छोटे भाई का संभालो। स्टारलिंक, स्टारलिंक तो अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं दोगे तो ये कैसे लॉन्च होगा। चलो भाई, अब हम लोग खाते हैं। अब हमका भूख लग गया ज्यादा। नाउ इट्स टाइम टू ईट। नाउ मैन ईट। आप लोग भी खा लीजिए क्योंकि अभी काफी देर तक कुछ होना नहीं है। आई एम नॉट श्योर कि शुड आई कंटिन्यू द लाइव स्ट्रीम और नॉट। आप लोग बताओ, शुड आई कंटिन्यू द लाइव स्ट्रीम, क्योंकि 40 मिनट है। दैट्स अ लॉन्ग टाइम। भूख लगा है, आप लोग भी खा लो भाई, मेरे को भूख लग गया है। समोसा मुड़ी खा रहे हैं। हम्म। सिग्नल, इनका वेंटिंग मेरे को अजीब लग रहा है, एकदम कंटिन्यूअसली वेंटेड किए जा रहे हैं भाई, क्या कर रहे हो। हीट टाइल लेकिन बहुत कम डैमेज हुआ है, सो इस बार मतलब ऑलमोस्ट आई थिंक कि अभी री एंट्री करेगा तो मे बी इट विल सर्वाइव। बहुत कम डैमेज दिख रहा है। पिछले बार तो मतलब अच्छा खासा सेक्शन गायब हो गया था, अभी ऑलमोस्ट सब बचा हुआ है। आप लोग भी वो म्यूजिक सुनो, इनका म्यूजिक चल रहा है, म्यूजिक सुनिए। मैं आज का वीडियो देख के आता हूँ। हाँ भाई, देख सकते हैं, इतना टाइम है, आराम से देख के आइए, कोई टेंशन नहीं है। दैट्स अ गुड थिंग टू डू, दैट्स अ गुड थिंग टू डू, गुड थिंग टू डू। बूस्टर भी थोड़ा और बूस्टर में इनको टाइम लगेगा, बूस्टर को इनको टाइम लगेगा। 226 किलोमीटर पर उड़ रहा है या ऑर्बिट कर सकता है? नहीं नहीं, ऑर्बिट के लिए वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी थोड़ा कम है। ये सब ऑर्बिटल है, मतलब अगर इंजन बंद भी कर देंगे तो ये खुद ब खुद गिर जाएगा। तो बना दिया तो भाई, सैटर्न 5 का बाप तो बना दिया। हाँ हाँ, लाइक बोल रहे हैं, अगर इसमें ये रहता कि पेलोड डाले रहते तो इट वुड हैव रीच्ड ऑर्बिट, उसमें कोई डिस्कशन नहीं है। सो वो प्रॉब्लम सॉर्टेड है इनका। एज अ रॉकेट सॉर्टेड, एज ए रीयूजेबल रॉकेट पूरा लोचा उसी पे है, रीयूजेबल बनाना इनको।
एज अ रॉकेट उनका प्रॉब्लम खत्म, मतलब बाकी किसी के कंपेयर में हाँ भाई हमारा सक्सेसफुल हो गया है। पता नहीं बूस्टर का रीलाइट क्यों फेल हुआ। अनलाइकली है कि स्लॉशिंग डैमेज हुआ होगा, कि सारा इंजन काम कर रहा था, स्लो कर दिए थे, बट वही तो पता चलेगा, तभी तो इन्वेस्टिगेशन होगा। क्योंकि बड़ा वीक स्पॉट पे, मतलब काफी इजी स्पॉट पे बूम हो गया। मेन था जब हॉट स्टेजिंग में ही सबसे ज्यादा रिस्क रहता है, ठीक है वो कर लिया सेफली, फिर होता है कि जब डी सेल करते हैं वो भी कर लिया सेफली, फिर एक्सेलरेट करता है वो भी कर लिया सेफली, उसके बाद जब इग्निशन मारे तब फेल हुआ है। सो वहां पे क्यों फेल हुआ, मे बी हॉट गैस जो अंदर घुस रहा था मे बी कुछ डैमेज कर दिया होगा, दैट्स द मोस्ट लाइकली आई कैन थिंक ऑफ, कि जो री एंट्री कर रहा था तो हॉट गैसेस जो एटमोस्फेयर का बनता है वो अंदर घुस के कुछ हुलुलुलु कर दिया। 233 किलोमीटर की ऊंचाई पे है। ये लगता है सॉफ्ट वो ट्रेजेक्ट्री चल रहा है, क्या बोलता है, धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं, धीरे धीरे नीचे, स्पीड कम होते जा रहा है लेकिन ऊंचाई बढ़ते जा रहा है। 234। बड़ा सॉफ्ट म्यूजिक लगाए हुए हैं। भाई लोग कुछ मिनट तक आप लोग को इंतजार करना ही पड़ेगा, और कुछ है नहीं इसका। मैं भी श्योर नहीं हूं कि करूं 40 मिनट तक का कि नहीं। स्टारशिप का कंप्यूटर लोड ले लिया है, वो बोल रहा भैया प्रोपेलेंट ट्रांसफर अब कम चल रहा है इंटरनली। देखिए मे भी वीडियो मिले। बूस्टर कितना एल्टीट्यूड पर, बहुत नीचे आ गया था। अच्छा चांसेस है कि बाकी किसी के स्ट्रीम में शायद वो कैप्चर भी हुआ हो, कैन नॉट गारंटी इट बट देयर इज अ गुड चांस कि बाकी के स्ट्रीम में कैप्चर हो गया हो। देखा, इनका खुद का रॉकेट। भाई बूस्टर का मैं दूसरे का वीडियो में देख खोजने को कोशिश कर रहा हूँ कि बूस्टर पकड़ाया क्या, मे बी। ये गया बूस्टर। बूस्टर कितना मिनट पे गायब हुआ था आप तो बता, अच्छा ये तो 5 मिनट्स पे देख रहा हूँ। 6 मिनट, 7 मिनट, 7 मिनट से पहले ही बूस्टर गया है, हाँ। ठीक है, बूस्टर का स्वाहा 7 मिनट T+7 मिनट 24 सेकंड के आसपास हो चुका था। हम्म। लेकिन भाई टीम जी आप दिखाओ, अपना दिखाओ भाई, इतना 4K उर के में मेहनत की हो। भाई ये भी लगता है ये यही करने लगा, क्या बोलते हैं, स्पेसेस का स्ट्रीम दिखाने लगे, क्योंकि मतलब वो स्पेस से कैमरा दिखा रहे थे ना, तो ऑब्वियसली ग्राउंड बेस्ड कैमरा उतना अच्छा नहीं रहेगा। स्टारशिप कंप्यूटर कह रहा है कि भैया प्रोपेलेंट ट्रांसफर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, स्टारशिप का कहना है कि पुष्कर कितना फटा, बहुत नीचे आ चुका था इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। एल्टीट्यूड वो 87 बता रहा हूँ। आखिरी सिंबल जो रीड हुआ है वो 12 किलोमीटर पे रीड हुआ है, मतलब 67, उसके बाद 12 किलोमीटर, उसके बाद जीरो आने लगा है। मैं चला के देखता हूँ। 22 20 एकदम सब चीज चल रहा है, 4000 किलोमीटर पर आवर पे चल रहा था। री एंट्री सब चीज सही चल रहा है, सही चल रहा है। 14 किलोमीटर, 13 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 11 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 7 6 5 4 3 2
110 1 किलोमीटर से नीचे आके फूटा है। और जो फाइनल स्पीड रजिस्टर हुआ था वो रजिस्टर है अराउंड 11 क्या बोलते हैं 1100 12 किलोमीटर पर आवर। 1112 किलोमीटर पर आवर पे वो बूम हुआ था, यानी ऑलमोस्ट वो दिखना चाहिए नीचे। आई एम प्रिटी श्योर किसी ना किसी ने कैप्चर किया होगा, एटलीस्ट आई होप सो। किसी ना किसी ने कैप्चर कर लिया होगा। देखते हैं भाई लोग ये कब 27 प्रोपेलेंट ट्रांसफर सक्सेसफुल हो चुका है, मतलब अकॉर्डिंग टू द कंप्यूटर। सही में हुआ कि नहीं बाद में पता चलेगा। ये अभी भी, अरे भैया इनका दरवाजा एकदम हमको समझ में ही नहीं आ रहा है। शिप समय बताएगा शिप का क्या होने वाला है, बट एज ऑफ नाउ शिप लुक्स गुड। एज ऑफ नाउ शिप लुक्स गुड। अब इसका हाइट कटने लगा है, मतलब 230 किलोमीटर से ऊपर जो गया था वो अब 230। डोर क्लोजिंग प्लीज, डोर क्लोजिंग का वीडियो दिखाई दो, डोर क्लोजिंग का वीडियो दिखा दो। कम ऑन, कम ऑन, आई आई बिलीव इन यू। डोर क्लोजिंग दिखा दो मेरे को। आई बिलीव इन यू। समोसा खा के आई बिलीव इन यू। ला सिग्नल ले चला गया। ये डोर खुल रहा है बंद हो रहा है कुछ दिख ही नहीं रहा है। मेरे को खुलने और बंद में कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है, मतलब लाइट जितना लीक कर रहा था वो अभी भी उतना ही लीक कर रहा है। सो आई डू नॉट नो व्हाट्स दैट्स हैपनिंग। लेकिन अब ऊंचाई इसका घटने लगा है, ये 228 तक उतर चुका है। 230 से 228 तक उतर गया, यानी कि अब वो बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी अब खत्म हो रहा है। इट्स लाइक ओके सर, हो गया, हो गया, स्पीड कम हो गया है। 30 मिनट होने वाला है, तो आई थिंक 10 मिनट और लगाएगा इनको, उसके बाद री एंट्री बर्न की तरफ जाएंगे। ओके, पेलोड डोर का बम। हाँ डोर, डोर मूव होते हुए नहीं, लाइट मूव हो रहा। डोर बंद हुआ, डोर बंद। डोर ढिंक चिका तो किया। आई एम नॉट श्योर कि अब बाहर दिखा रहे हो सर, डोर दिखाओ ना। जो ढिंक चिका कर रहा है वो दिखाओ। ये बहुत बॉयल ऑफ दिखा रहे हैं भाई, इनका बॉयल ऑफ तो हम ही को देख कर लग रहा है भारी, बहुत बॉयल ऑफ हो रहा है। हाँ 31 मिनट्स हो चुका था। आई थिंक एलन मस्क को बोला बच्चे टाइम में। वहाँ देखा। नाइस, नाइस। काफी आइस फ्लेक्स निकल रहा है। हाय तन्मय, क्या वीडियो देख के आ गया मेरा? सोल्डरिंग आयरन वाला वीडियो देख के आ गया। ओके, ओके। 31 मिनट्स अभी कुछ बोल नहीं रहे। सॉरी अबाउट दैट। वेंटिंग, दबा के वेंटिंग हो रहा है भाई।
अरे स्टारलिंक ग्राउंड के लिए बना है वो, मतलब अगर वो जियो स्टेशनरी में रहता तो ये पूरा कनेक्शन स्टेबल रहता है, लेकिन वो खुद भी इस पे है, क्या बोलते हैं, खुद भी लो अर्थ ऑर्बिट पे है। तो दो लो अर्थ ऑर्बिट के बीच में आप बात कर रहे हो, स्पीड बहुत तेजी से हो रहा है, तो इतना भी सिग्नल मिल रहा है वो बहुत बड़ी बात है। वो भी एकदम हाई फिडेलिटी। और प्लस हम लोग को इतना मिल रहा है गारंटी से, तो स्पेस एक्स के पास पूरा बैकअप आ रहा है डेटा का। जितना बार भी ड्रॉप हो रहा है ना, अच्छा चांसेस है कि वो एक सैटेलाइट से दूसरे पे स्विच कर रहा है। बाप रे बाप, ज्यादा लोग देख रहे हैं, 3 मिलियन व्यूज हो गया। क्या बात है भाई, लॉन्च के टाइम में कम लोग आए थे, अभी ज्यादा लोग आ गए। बूस्टर लैंडिंग बर्न एंड शटडाउन में, हाँ तो वो तो बोल रहे हैं ना कि रीइग्निशन नहीं हुआ। जो फाइनल डीसेलरेशन के लिए रीइग्निशन करना था वो नहीं करना था, लेकिन वो 1 किलोमीटर तक आ चुका था ऊंचाई के मामले में। तो मैं बहुत श्योर हूँ कि कुछ ना कुछ लोग तो कैप्चर किए ही होंगे, एटलीस्ट आई होप सो, कि भैया रीइग्निशन कैसे चल रहा होगा। आई होप सो, आई विश फॉर इट। 3 मिलियन लोग देख रहे हैं भाई, नासा अभी इतना अच्छा लाइफ नहीं दिखा। हाँ तो वो बोल रहे कंपेयर टू किसी भी और के कंपेयर में देख लीजिए, ये वन ऑफ दी बेस्ट है। आप देखिए ना, मतलब आप पेलोड बे के अंदर का जो कैमरा है कंपेयर कर लीजिए किसी भी और से। अभी देखिए जैसे स्ट्रीम अच्छा चल रहा है, एकदम फुल एचडी वीडियो है, नहीं लग रहा कि 1970 का कैमरा लाया गया है। तो है, जब चल रहा है कनेक्शन तो बहुत अच्छी बात है। और ये थोड़ा सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है, इनको स्टारलिंक बहुत चाहिए, तब जाके ये सब अच्छे से कर पाएंगे। तो स्टारलिंक लॉन्च कौन करेगा? स्टारशिप लॉन्च करेगा। तो अभी समझिए दोनों इनकम्प्लीट है, तो ऐसा मिल रहा है। तो अगर जब दोनों कंप्लीट हो जाएंगे तो कितना स्मूथली सारा सिग्नल मिलेगा। सो वी वी शुड बी रियलिस्टिक हियर कि क्या ये कर पा रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। ये तो 200 किलोमीटर तक उतर चुका है शिप। शिप मतलब बोल रहा है, अब वो नीचे चिल चिल डाउन में आ गया। नोकिया 30। एक्चुअली स्पीड बढ़ रहा है, 26,281 किलोमीटर पर आवर हो गया, स्पीड बढ़ रहा है, मतलब वो ग्रेविटी अब थोड़ा एक्सेलरेशन दे रहा है इसको। 284, 285, भाई स्पीड बढ़े जा रहा है इनका। इंजन चालू नहीं है। 195 किलोमीटर। IFT4 के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बूस्टर अनकंट्रोल्ड बिहेवियर किया, तो अनकंट्रोल्ड बिहेवियर होने के बाद आपको दिखाना पड़ेगा उसको, क्या बोलते हैं, FAA को, कि सर क्या हुआ था। फिर उसके हिसाब से करेक्शन बनाना पड़ेगा कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था। हाँ, सारा हाई तोबा क्लियर करना पड़ेगा। तो ये हो जाए तो स्टारलिंक का काम हो जाए। हाँ, उसी बेसिस पे चल रहे हैं, उसी के बेसिस पे चल रहे हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा, हाँ एलिवेटर म्यूजिक है, मॉल सब में चलता रहता है बैकग्राउंड में।
अभिनव शर्मा जी, आप बहुत ज्यादा पर्सनल ले रहे हो, लोड मत लीजिए। आपका पैसा नहीं लगा इस पे, तो लोड मत लीजिए, रिलैक्स रहिए। बहुत ज्यादा आप लोड ले रहे हो। हम्म, ये बात भी सही है। आर यू नॉट एंटरटेन्ड? उसके लाइव स्ट्रीम में सवाल आ गया, आर यू नॉट एंटरटेन्ड? आर यू नॉट एंटरटेन्ड? काफी ग्राविटॉस के साथ बोलता था, आर यू नॉट एंटरटेन्ड? मेरा गला खराब। Back to live coverage of our third Starship flight test, which lifted off from Starbase Texas at 8:25 a.m. Central Time. Our main objective today was to get through all of our ascent burns and collect as much data as possible, including a potential Starship entry. And we just came out of a coast phase and were treated to a number of HD views thanks to Starlink, including the PES door open close test. So that was one of our test objectives today that we met. So that's awesome. It has been such a great day. It has been a phenomenal test day. Just to see booster lifting Starship to ascent, ship completing its ascent. Just a wonderful day. Kind of to recap the objectives a little bit. Booster completed its ascent, ignited its 33 Raptor engines. We demonstrated a successful hot staging for the second time. Booster completed the boost back burn, didn't quite accomplish the landing burn, and then had a hard splashdown in the Gulf. Meanwhile, ship completely successful after the hot staging. We had a good 6-engine burn of the Raptor vacuum engines and sea level engines. And then we've commanded a number of demonstrations, including the Starlink satellite deploy demo, so the payload door, as well as a prop transfer demonstration. हाँ, फाल्कन मैन का कितना फटा हुआ फुटेज है, आप देखिए तो, खोजिए तो, बहुत बार फटा है वो भी। We are coming up on our next major milestones, which is an in-space relight of our Raptor engine for the first time, followed by re-entry and then landing in the Indian Ocean. Incredible. Yeah, that's right, guys. We should be just about 40 seconds away, 40 or 50 seconds away. 1 minute guys, 1 मिनट के अंदर ये लोग रीलैंडिंग, ये रीइग्निशन ट्राई किया जाएगा। This is not a deorbit burn. In fact, it's actually going to function a little bit opposite of a deorbit burn. We're going to be raising our perigee with this burn for the lowest point of our orbit. This is just to demonstrate that we can relight a Raptor engine on ship while it's gone through a coast, while it's in outer space, while it's in microgravity, all of the different complexities that come with lighting this engine again after it's already done an ascent burn, but you're now coasting through space. This is going to be really important anytime we want to do in-space maneuvers in the future, like eventual deorbit burns, any of our translunar injections that'll have Raptor engines firing back up. We may not do it. There is all of the guidance is loaded into Starship's computer itself. So if it doesn't see the values that it needs to, we could just skip the burn. So we are waiting to find out if that's going to happen or not. If it doesn't, as we said in the beginning, we're on a pretty steep trajectory that we are coming home no matter what, regardless of doing a burn. This was done just so we can really, we're in a trajectory that's really not super susceptible to delta V changes in velocity. If we were to do a burn, we've got a pretty concise footprint in the Indian Ocean that we're going to be targeting. I think reignition नहीं हुआ। It does sound like we are skipping past reignition नहीं हुआ। orbit relight demo this time. Again, we'll confirm all of this through our post-flight data review, but it did sound like we did pass through that burn. कंप्यूटर को कुछ ठीक नहीं लगा होगा तो वो बाईपास कर दिया। अब री-एंट्री ट्राई किया जाएगा। Yeah, that's exactly right. So coming up next around T plus 49 minutes is By the way, अगर ये entry. नॉर्मल रॉकेट रहता है, इट्स अ सक्सेस, हो गया, ये ऑर्बिट जा चुका है, मतलब अगर उनको जाना रहता है तो SpaceX भी ICBM बन सकता है, ऑब्वियसली।
Now, at those speeds, the spacecraft's interaction with the atmosphere results in friction and creates a plasma field around the vehicle. That blanket of plasma distorts communication frequencies, so we're basically left with a brief communications blackout. Now, we might get some telemetry back through a connection to the Tracking and Data Relay Satellite System, also known as TDRS. But if the plasma doesn't entirely block it, that connection will be at a very slow data rate and definitely too slow for any video. But that's why Starship and Starlink are a great अभिनव शर्मा जी, आप SpaceX से पहले क्यों पूछने लगते हो? उनको पता चलेगा, वो बताएंगे. रिलैक्स, लोड मत लीजिए, बहुत लोड ले रहे हैं आप. रिलैक्स, लोड नहीं लेने का. When you see a boat going through the ocean, it sort of leaves a trail behind it. There's some of those great views from Starlink, giving us views of Starship's onboard videos. And so we're hoping that the Starlink on board will let us, just like we're seeing these videos now, see through that plasma field by maintaining a continuous communication lock with the satellites on orbit through the wake that Starship leaves behind. Now, this is only the second time that we're testing Starlink during re-entry. So even though we do have these great visuals now, don't be surprised if we manage to get some signal hiccups through. We're still learning about what that wake will actually look like in practice and whether we're able to get that live continuous high-speed data during re-entry. Yeah, that's right. And one of the really primary reasons we want to use Starlink is to just gather as much data as possible. It's been said the data is the payload on one of these flights, where we're putting this flight hardware in a real flight environment, trying to learn about it as much as possible. Re-entry is going to be a really critical phase of flight. We really want to know how the ship's going to perform, especially that heat shield, as we're going through the hypersonic re-entry. So if something were to go wrong during this re-entry, we want as many paths as possible to collect that information, that data, just to, again, just continually feed back into the Starship program to make each flight more reliable, more successful. Acquisition single Mauritius. कुछ बोला सुनाई नहीं दिया ठीक से, क्लियर कट. स्पीड अभी भी बहुत स्लो नहीं हुआ है. Starship manages to make it all the way through re-entry. We'll collect valuable data on Starship flying through the Earth's atmosphere at hypersonic speeds, meaning more than 5, or at this point, will be more than 5 times the speed of sound. Now we're watching these live views, HD views by the looks of it, thanks to Starlink. You can see that the flaps there on the ship might be actuating. अच्छा, आई थिंक टाइल टूट रहा है. हाँ, ये सब ब्लैक है, वाइट नहीं है. टाइल टूट रहा है. Planet Earth behind Starship. Now, we've already validated Starship's ability to fly and land at subsonic speeds. You might recall those suborbital flights a few years ago, and we can see those flaps there. टाइल पे मेरा भरोसा कम हो रहा है. On aspects like heating and control while traveling way faster than we did before is going to be critical to eventually bringing starships back from space for rapid reuse. So I mentioned those flaps. That's one of the things that enables Starship to help control itself and survive the heat of reentry, which, like we said before, we're expecting that reentry to occur around T plus 49 minutes. So we're getting pretty close here. And what you're seeing here, it looks like the vehicle is sort of moving back and forth. Part of what you're also seeing is one of the cameras, this onboard view that we have, is on the end of a flap. Starship has front flaps and rear flaps in the vehicle. So we've got 4 of those. And oh man, we can see the heating. Okay. Things got interesting, guys. Things just got interesting. This is where the Earth's atmosphere is doing the work to slow us down. Come on, connection. You can stay. Oh, tiri. Whoa. Holy damn. Ooh, tiri. Views brought to you by Starlink. Yeah, the Starlinks are still communicating
and still capturing the data and the video that we see here. I mean, Shiva, this is just absolutely incredible views. हो We've तेरी never seen anything like this before. This is the biggest flying object ever in space. Absolutely, Kate. And it's important to note the ascent burn that we did was to get us to orbital velocities. Even वो though we तेरी were on a nearly orbital ओ जी trajectory, फीलिंग में बहे जा रहे हैं फीलिंग में बहे जा रहे हैं that Starship is going through right now are what it would be getting if it were recovering from an orbital mission. तेरी तो The fact that we have used to entry. अब स्पीड घटना शुरू हुआ Again, this is the furthest and कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन ever. कम ऑन कम ऑन रेडियो सिग्नल यू कैन पेनिट्रेट The crowd here in Hawthorne. The heat shield tiles doing their work. We talked about it earlier. Damn. 2,600 degrees Fahrenheit that those heat shield tiles are dissipating as we are re-entering. Yeah, now this was one of the critical, or rather the key mission objectives that we were hoping to hit today. We have never, like I said before, this is the fastest and furthest that Starship has ever flown. So this is the first time that we're getting to collect this re-entry data and understand. अब स्पीड घटना शुरू हो गया 4 3 hexagonal heat shield tiles are to working together 726 हो to गया the belly of Starship as it re-enters the Earth's atmosphere. Once again, the atmosphere is doing us a big favor here by 80 किलोमीटर तक उतर गया है actually doing us a huge favor here by acting as a 230 तक गया था for Starship as it re-enters the atmosphere. And that's part of the reason why the flaps are so important. We're using the body of Starship and the drag from the atmosphere to slow us down from orbital speed. But you want the vehicle to remain stable. You want those heat shield tiles pointed down so they can absorb the heat of the Earth's atmosphere. And so that's the purpose that they are serving during the hypersonic phase and then again during the subsonic phase. Absolutely. So like we said, these views are being provided by a couple Starlink terminals that are positioned on Starship itself. As that plasma builds, we're hoping that we can bring these views back to you, but you can see the telemetry there on the right-hand side of your screen. If you watch closely, you can see the speed decelerating. Again, that's the friction of the atmosphere. 69 किलोमीटर पे उतर गए Blanket. स्पीड अभी भी धीमा हो रहा है यानी कि इट्स बिहेविंग और अभी भी वो क्या बोलते हैं टेलीमेट्री आ रहा है But right now, for those of you that have recently joined, Starship is currently re-entering Earth's atmosphere. This is super exciting because it's the furthest and fastest that Starship has ever flown. It's just absolutely incredible. Major test milestone, something we wanted to accomplish on Flight 2, getting to it today. So just awesome. Now, we actually have some heat shields here. So these are what's doing all the work on Starship right now. There are 18,000 hexagonal heat shields like these. So this one that I have is flat, like this is what would be positioned on the flaps of Starship, whereas Shiva has something a little different. Yeah, the one I have would be on the curved surfaces of Starship. I'll just put it in frame here. So we've got these attached at various points around the vehicle. Like you said, Kate, 18,000 of these tiles around, and they're doing the work to make sure that the structure of the vehicle doesn't carry all that thermal load so we can recover the vehicles eventually and get to rapid reuse on them. They're really lightweight. They sound a little different than I would have expected them to, but they are ceramic. And these are what's helping Starship survive through this period of entry. We're not sure how far we're going to make it. Again, this is the furthest that we've gotten in our test flight, but the further we fly, the more data that we can get, and that's ultimately the measure of success here, which I mean, I think today has been a huge success given where we've gone and how much further we've gotten with both I think गया and Starship. भरोसा नहीं है नंबर चिपक गया है स्पीड भी नहीं चेंज हो रहा है एल्टीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा है Video is a very high data rate, and usually video comes after you get your telemetry. So hopefully we were able to get some wonderful data throughout the entry period, which is normally something we have to wait for until after splashdown when we get that data off the data recorders. Yeah. Now, you mentioned before the flaps. Again, that the flaps are protected by the flat heat shields like I have. There are 4 of those positioned on Starship, 2 at the forward end. I'm like मेरे को लग रहा है गया 2 at the bottom or तो टेलीमेट्री बहुत देर से रुका हुआ है independently to मे बी हीट उससे गुजर रहा है प्लाज्मा वेव में अब सिग्नल नहीं आ रहा है मे बी during
atmospheric flight and enable precise landing at the intended location. So today we are intending to splash down in the Indian Ocean, and we're hoping that we can make it that far. But regardless, it is an exciting end to what has been an exciting day. Absolutely. And I mean, we've had some tests in the past. We had suborbital campaigns where we have tested out the aerodynamic flaps at subsonic speeds. So that's below the speed of sound. At hypersonic speeds, well, supersonic speeds first, so faster than the speed of sound, and then hypersonic speeds. So that's more than 5 times the speed of sound. The equations of motion change, how the vehicle responds changes. So going through that control phase where we're going from faster than the speed of sound to below the speed of sound was one of the objectives today. Yeah. And that's actually a great point, because we are expecting that entry subsonic period to occur around T plus 1 hour and 3.5 minutes. So we're not there yet. We're about 10 minutes away from that point. So again, that is when Starship would be traveling slower than the speed of sound. यानी प्रसाद जी आप तो शायद शादीशुदा है ना? Braking system. And so right now we're still waiting to see if we're going to get data back from this ship. We might be in a bit of a blackout period right now. So still waiting to hear the status on it. But yeah, we got to the actual entry portion of today. We started into peak heating, which was just a really big milestone. Starship is pretty unique in the way that it re-enters, especially for something reusable. The closest parallel has been the space shuttle. When we're comparing Starship to like when we bring a Falcon 9 booster back, we're talking about 20 times the energy given the velocity that we're moving at, and all of that energy just gets converted into heat, and then we need to use those tiles to just help dissipate that heat. They're not ablative like you would see on something like Dragon, which uses an ablative in the capsule shape. So they are these tiles that are made to be reusable. So any data we're getting on the temperatures it was seeing, wife is also watching with me. really hugely valuable. Where Starship is really unique is, and Kate and Shiv have talked about it a couple of times, is once we're through this kind of hypersonic section and we get down to the subsonic, and that's where we really learned a lot and proved that Starship's really just its basic shape could work, and we did that during the suborbital campaign. Again, if you compare it to the shuttle, which entered, it had the wings, it had a similar heat shield system, but it had wings, and then was almost flown like a glider once it re-entered and was down to those subsonic speeds. With Starship, we're not doing that. We're just coming straight down. We'll hit terminal velocity, which with Starship is around 200 miles an hour. And then we use a flip maneuver to ignite those engines, do a landing burn, and then touch down on the ground. So you don't need a runway. अभिनव शर्मा जी बहुत ज्यादा आप लोड ले ले तो लोड उतना मत लीजिए. When we go to Mars, there's not going to be a runway there for us, and so that propulsive landing is going to be really important. This is an animation of pretty much what we were just watching on actual Starship video, which is pretty incredible. But we go through peak heating. One of the benefits of today's trajectory, actually, we got closer to what the heating profile will be on just a normal mission when you compare it to our previous flights, which were headed out to Hawaii. So we go through peak heating, and then we hit subsonic, and then Starship splashes down in the ocean. Again, we're not doing a landing burn on this flight. And we're not expecting Starship to survive the impact. We're not going to be recovering any of the hardware. नहीं, अगर वो टेलीमेट्री ब्लैकआउट में है तो 10-15 मिनट तक कुछ नहीं होने वाला है. Some signal back. We're currently at a loss of signal with Starship. तो लॉस ऑफ सिग्नल ही क्लेम कर रहे हैं. What its status is, and so we're just continuing to listen in. But it was pretty incredible seeing the flaps really do their thing to maneuver the vehicle as it's moving through hypersonic. One of the big trade-offs between something like Shuttle and Starship is wings can be pretty heavy. And so if we can really demonstrate that Starship's controllable through that hypersonic regime when you're coming through the atmosphere, 25 times the speed of sound, you can save a whole lot of weight by not having really big wings. So super valuable to get this data, super valuable to then figure out what we're going to do on our next test flights. Yeah, and you'd brought up a really interesting point too, that for on Shuttle,
you are gliding in, going back to a runway on Starship. Because we're landing vertically, we are basically coming down, and then we've seen this during the suborbital campaign. We're not going to see it today, but during the suborbital campaign, we did the flip maneuver and then light our engines for a landing burn. And that's also really important for some of our other terrestrial destinations, that we don't have as much of an atmosphere on Mars. There is pretty much no atmosphere. There's some great views from our previous पिछला टेस्ट है, ये टेस्ट नहीं है. of a landing burn and upright landing. But on the moon, there is no atmosphere. On Mars, the atmosphere is extremely thin, so you actually need some other sophisticated techniques that other landers have used to land there. And so this vertical landing technique is really important to landing on destinations like those, which is ultimately where we're trying to go. Yeah, absolutely. So we hope to demonstrate that landing in future missions. That wasn't one of our objectives for today. We wanted the ship to focus on opening and closing, the first demonstration of opening and closing the PEZ door, which is where we will deploy Starlink satellites from in the future, as well as gathering data on how the heat shield tiles performed during the entry period. And so far, all of that has gone really well. So overall, it's been pretty great, and it's great to see how those initial tests that we performed a couple years ago for those high altitude tests allow us to see what those will look like in the future. But this piece that we're doing today of, okay, if we are coming back from orbital velocity and we're going through that entry period, that is the missing piece, right? We already figured out how to land once the ship gets to a certain velocity or altitude, and it's really this piece that we were trying to figure out today. How do we get Starship to survive orbital velocity atmospheric entry? And we hope to find out soon. Yeah, I mean, we talked about rapid iteration and how we do design. Part of our philosophy is testing early and often and trying to test in a way that is as flight-like as possible. But there's only so एनी much टॉप टेलीमेट्री चिपका इसलिए है क्योंकि वो अभी ब्लैकआउट जोन में है, तो 10-15 मिनट तक ब्लैकआउट जोन में रहता है. exactly in a laboratory. At least that's what they are telling. When the heat shield tile hits the atmosphere in flight to gather that wonderful data. क्लॉक चल रहा है तो मैं श्योर हूँ कि उनको पता है कि शिप जिंदा है. Probably teach us a bunch of things that we didn't quite get right. For sure. And obviously, for those of you that have been watching along with us, those were incredible views to see of that entry period where we saw the heat generating because of friction as the belly of Starship was making contact with the Earth's atmosphere, and that resulted in some plasma. So as Dan said before, we believe that अरे बाप रे बाप, आपका नाम किस लैंग्वेज में लिखा है भाई? पढ़ा ही नहीं रहा. वेलकम टू तिगड़म. स्वागत है हमारे तिगड़म क्लब में. We would be expecting the vehicle to be approaching subsonic or slower than the speed of sound speeds in 3.5 minutes from now. So if it's still up there in one piece, it still has a way to go. We're not there just yet. 3 मिनट बाकी है भाई लोग. Building up around the exterior, which प्लाज्मा विंडो 3 मिनट में खत्म हो जाएगा, assuming the ship is जिंदा. And we're at a loss for telemetry at that point in time. Yeah. So Dan's seen a lot of those with Elon Musk knows how to hold views. हाँ, वो सही. भाई 3.9 मिलियन व्यूज हो गए हैं. मतलब 3.9 वो क्या बोलते हैं, as in like concurrent है. Some of the telemetry that we did, it did look like we lost Starlink and our Tedra's data flow at the exact same time. Now, if both of those signals are cutting out at the exact same time, that could mean we lost the ship. It has been several minutes since we've gotten any data from Starship. We are waiting just a couple more minutes just to see if we can get any additional confirmation, but that is one data point that we're tracking, and that could indicate that we had a loss or a breakup of the ship during that re-entry. So might not make it all the way to splashdown today, but we were able to get through the early phases of re-entry, hit some of that peak heating, which was just really incredible to see a Starship coming back from space after getting all those views from space for the very first time. So we'll just keep on listening in on the loops here, see if we hear anything over the next couple of minutes. And that might bring a close to a pretty successful day so far. So again, we did lose the Tedra's. That's the tracking and data relay satellite. That's the satellite system that
pretty much every spacecraft operating in orbit right now will use to get data. We were able to get some signal through that, and then we were also getting data back through Starlink. Live view here of mission control down at Starbase. So these are all the folks who are experts on the various different systems, taking a look at the live data that we did have. Probably Chances है कि गया. still, Yeah, but absolutely. it would be so tough to stay focused with what an exciting day we've had today. Yeah, to quote Monty Python, I'm not dead yet. We don't know, as Dan said. We did lose connection with TDRS, which is the tracking and data relay satellite system, and Starlink at the same time. So it is a realistic possibility that we lost Starship, which honestly was always on the table. We didn't know how far it was going to get. The further we could fly and the more data we could collect was always the biggest win. And so regardless of, if we did lose the vehicle and we are not able to, make it all the way to our intended splashdown, note that we weren't intending to recover this vehicle, either vehicle, the Super Heavy booster nor the Starship. We weren't intending to recover either of them. They were both going to basically hit at terminal velocity and break up upon contact with the surface of the ocean. So we're standing by to hear whether or not we are going to be able to get telemetry readings back, but we are possibly anticipating news that we lost Starship due to basically a double blackout from TDRS and Starship data at the same time. But it's worth mentioning, this is the first time that we have come back at these speeds Absolutely. in any of the test flights that we've done so far with Starship. So we are trying to prove out that the heat shield works as intended, that the controllability at those hypersonic speeds works as intended. So if we were able to get back any data on that, that means the next version, what happens on flight 4, 5, 6, is going to be better. And we must be able to get some because we saw incredibly gorgeous high definition views of that entry period. हाँ, अब लग ही रहा है कि चला ही गया है. So we must have gotten some. हाँ, मोए मोए हो गया है इसका. I'm pretty sure मोए मोए हो गया है. लेकिन क्लॉक क्यों चला रहे हैं ये लोग? Full ignition of all of the boosters, engines, successful. भाई मोए मोए हो गया, खत्म करो यार. मतलब अब भाई कब तक सस्पेंस रखोगे? To see the ship actually make it further as well as the booster. We were hoping that the booster would perform a soft water landing, but we lost it during just before it was able to ignite the landing burn. But the ship continued on. We saw all six Raptor engines on the ship ignite and then shut down for second engine cutoff. And we saw some amazing views as well, and it's just been certainly a day that I will be taking many screenshots and using them as my computer desktop background for, well, until the next Starship launch. When we get even better views, I'm sure. Exactly. And we also hit a number of our other. हाँ, अब हमको लगता है अब इसको बंद करना चाहिए. I think शिप जा चुका है. ओके भाई लोग, चलिए ये अब इसको हम बंद करते हैं. I have a feeling कि भैया गया है, अभी लोग घसीट रहे हैं. ठीक. ओके. And we got to see that. Yeah. And so those commands were sent. Again, data review to come and make sure that. हाँ भाई, ठीक है. तो हम एक रफ ओवरव्यू बता देते हैं. क्या ये सक्सेसफुल है? जो करना चाह रहे थे उसमें काफी हद तक सक्सेसफुल हो गया. रीयूजेबल, मैं बार बार बोलता हूँ कि रॉकेट बनाना आज के टाइम में आसान है, रीयूजेबल रॉकेट बनाना मुश्किल है. तो इनका बूस्टर ऑलमोस्ट समझिए 90% तक चला गया था, बट वो लास्ट 10% में ही सबसे ज्यादा बूम होता है. तो क्या हुआ? रॉकेट लॉन्च हुआ, लॉन्च क्लियर, मतलब इनको अब लॉन्च के बारे में नहीं सोचना है. लॉन्च इज सॉर्टेड. लॉन्च के बाद हुआ हॉट स्टेजिंग. हॉट स्टेजिंग पिछली बार में दिक्कत कर गया था, इस बार हॉट स्टेजिंग में कोई दिक्कत नहीं हुआ. ठीक है, हॉट स्टेजिंग इज सॉर्टेड. हॉट स्टेजिंग के बाद आता है बूस्ट बैक बर्न. वो भी बूस्टर कर लिया, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है. बूस्ट बैक के बाद जब वो रीलाइट करना था वहां पे वो गया, वो ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर तक उतर चुका था, बट तब वो चला गया. तो ये हुआ बूस्टर के साथ. अब रहा बात शिप के साथ. शिप आराम से डिटैच हुआ, इग्नाइट किया, ऊपर गया. मतलब अगर उसे कमांड दिया जाता ऑर्बिट में जाने का, वो चला जाता. मतलब कोई भी उसमें दिक्कत नहीं हुआ, कोई भी फेलियर नहीं हुआ. तो वो पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा है, वो ऑर्बिट चला गया. तो यानी एज ए रॉकेट, एज ए ऑर्बिटल क्लास हेवी लिफ्ट रॉकेट, दे आर सॉर्टेड.
मतलब कि अगले बार वाले में अगर वो चाहें तो वो पेलोड रख सकते हैं और अच्छा चांस रहेगा कि वो डिलीवर कर देंगे। तो दैट इज़ गुड, दैट इज़ सॉर्टेड। अब रहा बात कि इंजन रीइग्नाइट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, ये वो ऑब्वियसली एनालिसिस के बाद पता चलेगा, अभी नहीं पता चलेगा। उसके बाद होता है कि जब ये री एंट्री किए काफ़ी देर तक इनका डेटा सिग्नल चलता रहा, लेकिन एंड में त्याग दिया। बट अगेन दैट इज़ टू बी एक्सपेक्टेड। इनको लग क्यों रहा है कि शिप उड़ गया था? शिप इसलिए उड़ गया था क्योंकि जैसे ही वो प्लाज्मा विंडो में गए तो वीडियो सिग्नल के साथ साथ ये चला गया। रुके रुके। Along the way, but third time's the charm, and we made it to space. We also a big thanks to all of our future customers. हाँ हाँ, मतलब कि वो चला ही गया, I'm pretty sure। हाँ तो जब वो ये किया, क्या बोलते हैं, रीइग्निशन का विंडो में गया था, तो रीइग्निशन कंप्यूटर बाईपास कर दिया। कंप्यूटर के पास वो अथॉरिटी रहता है कि कोई कमांड है, वो मतलब चेकलिस्ट के तौर से जा रहा है, अगर कोई चीज़ एरर आता है तो वो नहीं करता है। तो इंजन रीलाइट, वैक्यूम रीलाइट, ये बाईपास की, ये इलॉन मस्क का सबसे पुराना फोटो है स्पेसएक्स का। Was founded on this day in 2002 when it basically consisted of this small team, a carpet and a mariachi band. I don't know about you, but we're feeling 22. Also, it's Pi Day. दैट इज सिग्निफिकेंट कि मतलब आप 2002 से यहाँ तक आ गए और हैवी, ये क्या बोलते हैं, अल्ट्रा हैवी रॉकेट आपने बना लिया, जो कि कोई और देश कह ही नहीं सकता। तो दैट्स अ बिग बॉल्स। बॉल्स के मामले में वो सक्सेसफुल रहा है। अब रहा बात कि कितना, ये पाई डे है इसीलिए लोग पाई खा रहे हैं, कितना ट्राई लगेगा इनको ऑर्बिट पहुंचने में। आई थिंक कि चौथे वाले में, इसी में ऑर्बिट पहुंच गए थे। इट्स लाइक इफ दे हैड ऑर्बिटल ट्रजेक्टरी, ऑर्बिट चले जाते, मतलब पेलोड डिलीवरी हो जाती। री एंट्री में उनको बहुत टाइम लगने वाला, मैं क्लियर कर देता हूँ। रॉकेट बना लेना सॉर्टेड है इनके लिए। तो चौथे वाले में आई एम प्रिटी श्योर कि वो अगर कोई मिशन करते हैं ऑर्बिट के साथ वो कर ही लेंगे। री एंट्री में इनकी बैंड बजने वाली है, क्योंकि इस बार काफी हद तक हीट शील्ड बर्दाश्त किया एंड पीक हीट लोडिंग वो सरवाइव कर गया था। सो देर इज अ गुड चांस कि डैमेज ज्यादा नहीं हुआ। बट क्यों फिर फेल हुआ, आई डोंट नो, वो रिसर्च के बाद पता चलेगा। मे बी कोई जॉइंट फेल हो गया, विंग टूट गया, या एकाएक कोई बहुत बड़ा कुछ हुआ। सो वो बाद में क्लियर होगा, जितना डेटा उसके साथ था उस डेटा के साथ क्लियर कर लिया जाएगा। तो ओवरऑल दिस वाज अ गुड सक्सेस। और ये अगर आप इनको देखते हैं, इनका क्या बोलते हैं, लॉन्च 1 से लॉन्च 2 में, लॉन्च 3 में इनका एक कंटिन्यूअस प्रोग्रेशन दिख रहा है। मतलब लॉन्च 1 में लॉन्च पैड ही तबाह हो गया, बहुत डैमेज हो गया, किसी तरह रॉकेट ऊपर गया और सेपरेशन स्टेज नहीं कर पाया। ठीक है, ये लॉन्च 1 था। लॉन्च 1 बहुत बुरी तरह से मतलब फुस रहा। लॉन्च 2 सक्सेसफुल टेक ऑफ हुआ और सेपरेशन तक चला गया। सेपरेशन के बाद मतलब अपर स्टेज सक्सेसफुल था, लेकिन बूस्टर स्वाहा हो गया था। ठीक है, और सेकंड स्टेज में ये दिक्कत हो गया, क्या बोलते हैं, और ये इनका बंद हो गया है। सो आई थिंक, हाँ, तो सेकेंड स्टेज जो था वो, उसमें जब ऑक्सीजन डंप किए, वो ऑक्सीजन डंप से आग लग गया। आग लगने के बाद वो भी बूम हो गया। तो ये हुआ दूसरी ट्राई में। तीसरे ट्राई में लॉन्च किए, बहुत बढ़िया सक्सेस हुआ। लॉन्च करने के बाद ये हॉट स्टेजिंग किए, वो भी सक्सेसफुल रहा। हॉट स्टेजिंग के बाद बूस्ट बैक बर्न हुआ और शिप ऊपर गया, ये दोनों भी बहुत बढ़िया से हुआ, बिना कोई दिक्कत के, अति उत्तम। इसके बाद हुआ कि जब बूस्टर रिटर्न के टाइम में फाइनल रीलाइट कर रहा था, तब वो स्वाहा हो गया। वो 1 किलोमीटर तक गया था, मतलब ऑलमोस्ट पहुंचने पे आ गया था। तो वो हटाइए, मतलब बूस्टर अपना काम कर लिया। आई थिंक बूस्टर इनको 2 या 3 ट्राई और लगेगा, लेकिन स्प्लैश डाउन तक पहुंच जाएंगे वो। अब रहा बात कि स्टारशिप का क्या हुआ। स्टारशिप सक्सेसफुली ऑर्बिट चला जाता, इसी बार ही चला जाता, और पिछले बार भी आग लगने के चलते वो नहीं गया था। तो इस बार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। री एंट्री में फेल हुआ, बट टू बी एक्सपेक्टेड, री एंट्री एक बार में क्रैक नहीं होगा। सो आई वुड से कि एटलीस्ट 4 या 5 बार री एंट्री इनको लगेगा। बट ओवरऑल स्पेसएक्स का जो डायरेक्शन है, 1, 2, 3, और कितना माइलस्टोन अचीव करते जा रहे हैं, ये काफ़ी लीनियर है। यानी कि मतलब कि अब कोई भी कंट्री, अगर कंट्री या कंपनीज में इन्वेस्ट कर रही है, दे आर वेरी सॉर्टेड कि भैया 4-5 में आप पहुंच ही जाओगे जो आप करना चाहते हो। हाँ, इट वुड बी बेटर अगर एक ही शॉट में हो जाए, बट दैट्स नॉट रियल लाइफ। और जितना स्पीड से ये लोग पहुंच रहे हैं, हर बार जो इटरेशन कर रहे हैं वो दिख रहा है इनको, कि बोल रहे हैं आप 1 को कंपेयर कीजिए 2 से, 2 को कंपेयर कीजिए 3 से, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है। और जो इनके पास फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो किसी और देश के पास है ही नहीं, कोई उसका सेकंड है ही नहीं। तो कंपटीशन का सवाल ही नहीं, ये खुद से compete कर रहे हैं। तो इनका ओवरऑल सब चीज बम बम रहा। तो चलिए, इसी के साथ हम आप सभी लोगों से विदाई लेते हैं। आपसे दोबारा मुलाकात होगी कुछ दिन बाद। बाय।